हेलो गाइज, हेलो हेलो हेलो। क्या मेरी आवाज़ अच्छी से आ रही है? आई थिंक सब कुछ अच्छा चल रहा है। ओके गाइज, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ स्ट्रीम तो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ स्ट्रीम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ स्ट्रीम। ओके गाइस, सब कुछ सही चल रहा है, एकदम मस्त मक्खन। तो कल लाइव स्ट्रीम मैंने ऑन की थी, बट कुछ रीजंस था, वाईफाई का कुछ इश्यूज था, उसके वजह से स्ट्रीम कर नहीं पाए थे। तो आज आए हैं हम लोग दोबारा से फाउंटेन का आर्कॉन क्वेस्ट करने के लिए। तो पिछली बार हम लोगों ने यहाँ यहीं पर फाउंटेन का आर्कॉन क्वेस्ट शुरू किया था पसों के सामने। नाविया के फादर के ग्रेव पर न्यूलेट आया हुआ था, अपना शोक जता रहा था। अब हम लोग भी दोबारा से वहीं जाते हैं और न्यूलेट से बात करना शुरू करते हैं। Oh, it's you two. Did Miss Navia invite you to come pay your respects to her father? We ran into Navia on the streets today, so we just followed her here. I see, I see. Then is there something that I can help you with? Well, it's pretty hard to run into you like this since you're usually super busy. So we figured we could try to ask you a few questions, if that's okay. Please feel free. Though outsiders, चलिए, you helped लगता us है कुछ solve one of the क्वेश्चंस हम लोग greatest को mysteries पूछना in है Fontaine, न्यूलेट से। and it would be my pleasure to return the favor. पहले इसके भाई Your के बारे में ही sibling, पूछते हैं। another blonde-haired traveler. I'm sorry, but I've never seen anyone who matches that description. If he ever stepped foot in Fontaine, अभी से I'm लगभग sure he हम लोग followed our 1.5-2 laws घंटे to the लाइव करने letter वाले हैं। and had no reason अगर to लाइट appear नहीं on the जाती stage of है the तो, opera Epicles. अगर लाइट Is चली गई तो फिर there मैं कुछ नहीं anything कह else सकता। you'd like to ask me about? अब इसको सिर्फ एथर के बारे में कुछ नहीं पता। चलो प्राइमोर्डियल्स के बारे में पता So, करते हैं। at court, the bad guys referred to that special water as water from the primordial sea. But what is it really? Truthfully, that name is already quite accurate. I can only surmise that Vacher and his ilk only learned of its nature and existence after extensive research. There used to be a special sea on the surface of this planet. The nature of its seawater was rather different from that of the sea we know today. Most of Tevat's life forms were first born in that special sea. You could say it nurtured much of the life on this planet. अच्छा, So it really was where everything began. It makes sense to call it primordial then. But today, the primordial sea no longer exists on the planet's surface. What Vacher discovered must have been some kind of special case, or a remnant from a truly ancient age. So that's how it is. Oh, you really know everything, Monsieur Neuvillette. But if that's the case, then why would people, at least people from Fontaine, dissolve in that kind of water? Indeed.
Why would the primordial sea, which was known to engender and nurture life, suddenly reverse itself and devour life instead? To be frank, that also doesn't match my understanding of this world and its laws. There must still be some unknown secrets around the people of this land. Is there anything else you'd like to ask me about? चलो उस हुआ या फिर जो भी हो That the sea levels will एक बार हम पता rise and करते हैं everyone कि will be dissolved in water, leaving Farina सब crying alone on her throne, but the sins of the सब people हो will be जाएगा। finally washed away for good. Does that appropriately summarize the version you've heard? Right! It was Lenny that told us back then. And that about covers all the main points. Yes, up to the present, I think we reached a point where we have no choice but to confront this prophecy directly. Rumors have it that this prophecy is rooted in the last words the former Hydro Archon left to the world before she passed away. A prophecy? Of the former? Wow. This is the first time that we've ever heard of it. Two parts of the prophecy have already proven correct. The rising sea levels and the ability of the people of Fontaine to be dissolved. We should be more vigilant and stay on the watch for further signs. Speaking of the prophecy, Farina has also always taken it quite seriously. Indeed, she has been collecting information and intelligence from across Tevat for this purpose. If the rumors were true, then perhaps this prophecy is the conundrum left to Farina by her predecessor. But with Farina being the way she is, can we really trust her to solve it? Is there anything else you'd like to ask me about? उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया भाई ये क्यों भाई My apologies. My investigation has still not reached its conclusion. However, I still believe the judgment of the Oratrice was not rendered arbitrarily. But you also said you thought he was innocent. For many years, I have been quite aware that the Oratrice does not simply mechanically repeat the verdict that I give on each case. As a divinely created mechanism, the people's unified faith in the concept of justice is integrated into it. Not only can it produce the incredible power of indemnitium, but it likely also possesses other traits, such as self-awareness. Which is all to say, I have been prepared for a situation like this for a long time. So when Lenny told us that he heard a human voice from the room where the Oratrice's core is stored... I was not aware such a thing had occurred. Perhaps that could serve to prove my conjecture. I will add that to the list of items to investigate. In any case, I am inclined to believe that the Oratrice does have a methodology all its own. We just do not have enough information. Based on Farina's reaction, I doubt even she had any idea what was going on. She managed to bluff her way through it, though, with her time-tested twin tricks of bravado and drama. While we do intend to get to the bottom of this, for now, we regret to say that the Fatui Harbinger will just have to bide his time in the fortress of Meripede. If we did incorrectly convict him of crimes he did not commit, we will most certainly compensate him to the fullest extent allowed by the law. If you ask Paimon, the only compensation he'll want is a no-holds-barred fight with you. Is there anything else you'd like to ask me about? नहीं आई थिंक हम सारा चीजों के बारे में पूछ लिए हैं तो आई हैव नो मोर क्वेश्चंस Very well. It was my honor to provide you with what answers I could. I very much enjoyed conversing with you. It will soon be time for me to leave this blissful tranquility behind and return to Palais Memoria. You really are super busy, Monsieur Neuvillette. Paimon thought you only came here to pay your respects today because you had the day off. Crime and villainy do not have the day off, and so justice must work around the clock as well. This is merely the nature of a justice's work. You've got a point. Huh? Just noticed that the rain has stopped. न्यूलेट खुश हो गया इसलिए बारिश भी रुक गया हाइड्रो ड्रैगन जब दुखी होता है तब बारिश भी होती है ओके कौन सा एक्ट कंप्लीट हुआ यार 33 मिलियंस अब कहाँ 900 मीटर दूर कहाँ जाने के लिए बोल रहे यार ओह
शायद अंडरग्राउंड जाना है हम लोगों को। वेट अ सेकंड, हम इसका वॉइस जो है वो फुल कर देते हैं। आई थिंक अचीवमेंट एज लाइट रेन फॉल्स विदाउट रीजन। ओके ठीक है, और कुछ है क्या? नहीं। क्या मेरे पास एक स्पिन हुआ? नहीं हुआ यार, शिट ब्रो शिट। 47 मीटर स्लो। यहाँ क्या इन्वेस्टिगेट? चलो इसके कद्दू चुरा लेते हैं, सेब है, जो भी है आलतू फालतू सब चुरा लेंगे, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। Yep, it's there, and it's actually waiting for us as promised. He is such a good person. Now that the serial disappearances case has been solved, no one's going to come after us for anything. Even without Silver standing guard, we can just completely relax. Why don't we stay and rest up here for a while? Even machines of Fontaine need to stop and recharge now and then. This place isn't that bad. Besides, we get to stay in an actual base. Oh, fine. Remember that detective story Paimon read before? Well, the author is about to release a new book, so Paimon wanted to buy it as soon as it came out and have a quiet place to read it. Then it's agreed. Come on, let's get some sleep. We'll need to be up first thing in the morning to get in line and buy a copy. I didn't expect that style at all. You know it's a detective novel? It's also like a social documentary. Ooh, it's actually pretty good. No, just spends a bit more time sleeping than you, that's all. Excuse me, but do you know if the Traveler and Paimon are lodging here? Who are you? I doesn't recall seeing you before. Wait, you're give us trouble, are you? A blonde traveler and a chatty little fairy. Phew, looks like I found the place. Good thing I asked the Spina di Rosula. Seems they sent me the right way. Most of the time, anyway. It's an honor to meet you both. I was sent from the Palais Mermonia. Monsieur Nourilat wishes to see you. It seems he has something important to discuss in person. Nivelette? She wants to see us again, huh? यूलेट को फिर से अकेले में मिलना है। We talked so much the last time we met. Has something happened since then? I am not privy to the details. It would be best if you came to the Palais Mermonia and asked Monsieur Nourilat in person. If you say so, but Hyman has a bad feeling about this. Now that I've delivered the message, I'll take my leave. We haven't left the room for a few days, so we'll head over once we've freshened up a bit. Act 3। ओके। हम्म। Wait a minute, 123 रेजिन। ओके चलो, रेजिन्स तो ओवरलैप नहीं हो रहा। डेली कमीशन, ओ चारों कंप्लीट हो गए। ओके, एक स्पिन भी मिल गया, नाइस। पहले बाहर चल के अब 20 प्रीमो जेम्स लिए जाएं, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? प्रीमो जेम्स का मामला।
व्हाट? आई, ये क्या हुआ? Ad Astra Abyss. Thank you for completing. ओके गाइस, मेरा AR-53 हो चुका है। नाइस 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 Ad नाइस। Astra Abyssos. और क्या है? क्लेम एडवेंचर रैंक रिवॉर्ड्स, इसमें क्या मिलने वाला है? ओके, स्पिन और 2 फ्रेजाइल रेजिन। चलो सही है सही है। Ad अभी Astra. और भी है क्लेम करने के लिए। There'll be an extra. ओके, कंटेन में हो गया। Exactly. But none of वेट अ मिनट गाइस, 1 मिनट रुक जाओ बस, मैं जरा सा कुछ कर रहा हूँ। You're right. now there'll be Can an we extra play thing. finger next time? Time itself is a science. Fireworks are for now, but friends are forever. No. Now, think about it. You're right. It's a Oh. Exactly. But none of them believed me. There'll be an extra. वो क्या करने वाले थे? Now, Can we play finger? हाँ, स्पिन करने वाले थे गाइज। 2 स्पिन हो चुके हैं हमारे पास। चलो मैं स्पिन एक्सचेंज कर लेते हैं। वैसे बिना एक्सचेंज किए भी काम हो सकता था, बट एक्सचेंज कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलो सेंटर बैनर को पहले स्पिन मारा जाए। हाँ, डॉग शिट, कुछ खास काम का नहीं है भाई। बेनेट दे दे भाई, बेनेट प्लीज भाई, बेनेट दे दो, बेनेट दे दो। अबे यार, कितना स्लिंग शॉट मिलेगा भाई? स्लिंग शॉट को 10 बार मिल चुका होगा मेरे को अभी तक। बेनेट दे दे भाई। नहीं देगा साला, गेम चाहता ही नहीं है कि हमको मिले। बेनेट के बदले देखो मुझे क्या मिली है। ये देखो गाइस, कुछ सारा C3। अब क्या ही बोलूं यार, कुछ सारा C3 हो रखी है, बट बेनेट एक बार भी नहीं मिला। क्या बकैती है भाई। एक मिनट, लेट मी चेक माय आर्टिफैक्ट्स। लगा हुआ है। लगा हुआ है। टोपी शिवना हुआ। यहाँ तो इस पे तो लगा हुआ ही नहीं है भाई। ऐसे भी इसे यूज कौन करता है? ऐसे तो बस मैंने If we've got nothing else to do, अटैक why don't I tell you a डैमेज बढ़ाने story? के लिए किया हूँ। डबल पायरो एनर्जी 25% अटैक बोनस मिलता है, इसलिए बस लगा के रखा है मैंने ये जैंगलिंग को। वैसे मेरा नावी और फ्रेना से ही हर फाइट का काम निकल जाता। ओके, Did you want to see us about something? Huh? Why were you just standing there? You daydreaming or thinking something over? yes, I did send someone to fetch you. But as for what I'd like to discuss next, well,
I still have some reservations. We've already made the trip here. You should just tell us. Bet you need us to help you with something, right? I do indeed have something I'd like to ask you to do. However, you should wait until after I tell you the details, then decide for yourselves whether you'd like to help or not. The situation is this. Huh? If I'm understanding you correctly, the Snezhnayan harbinger known as the Knave has essentially requested a diplomatic meeting with you, correct? I heard that she was originally from Fontaine, but for her to suddenly arrive here and abruptly request such a meeting like this, I sincerely advise you to refuse her invitation outright. I'm sure you're aware that her purpose is most likely related to Child's recent predicament. We convicted one of the Snezhnayan harbingers in a court of law, but we have yet to provide any form of detailed report on the matter. This does indeed provide an opportunity for Snezhnaya to put pressure on us. I believe we should adopt an evasive stance until we can provide a proper explanation and have a preliminary plan on how to deal with the matter. No, we shouldn't. I think we should agree to the meeting. Oh? Well, you see, we are the ones that owe an explanation. If we keep putting off the meeting, it could easily result in the problem escalating, right? It's like a fight between two friends. If they don't agree to see each other and talk in person, isn't it possible that the friendship could end entirely? Though diplomatic relations between Fontaine and Snezhnaya could be considered as friendly, it is only superficially so. You wouldn't go so far as to say that our nations are friends, as you did in your example. It was just an analogy. An analogy, okay? Moreover, even if we were to talk in person, if we don't have sufficient information prepared, it is quite possible the result wouldn't be restored relations, but a complete falling out. I don't think we should overthink those possibilities yet. Even if the logic of the divine is not immediately apparent, its wisdom will only be revealed with time. Besides, you'll be at the meeting. If any problems do pop up, you'll have no problem navigating them. I must clarify that interacting and communicating with people outside of court is not my cup of tea. It seems you think too much of me. But more importantly, when did I agree to join the meeting with you? You won't come? What the fuck? No, ये क्या that हरकत है won't फरीना का do. यार? I can't go to the meeting alone. You have to accompany me. I must take you with me. Lady Farina, could there be something else regarding this matter that is being kept from me? No, not at all. Look, I am the Hydro-Archon of Fontaine, Focalor, the god of justice who is loved and adored by many. So I only hope that justice will be served in this matter. Don't overthink it. I'll go find someone to arrange the meeting. दम बड़बोली है न्यू लड़का तो कोई बात ही नहीं सुनना फरीना को Though it could officially be considered a diplomatic conference, I prefer to see our meeting today as an ordinary tea party. Oh. I assume you see it the same way, Miss Farina? Actually, no. The knave. What's the 11 for the Avengers? Lady Farina? Yes, She's so that's powerful. right. Just like you said, a tea party. I should thank you for providing the pastries. They look delectable. To make this tea party even more lively, I've invited someone else to join us today. It's a pleasure to meet you, Monsieur Neuvillette. I was born in Fontaine, so naturally, there's no need to introduce the nation's revered Rdx to me. Hello. The pleasure is also mine. First, I would like to thank the two of you. I'm often away on business outside of Fontaine, and I'm told that the children of the House of the Hearth have been well taken care of by you. Oh,
I'm not referring to when my children, Linny and Lynette, were falsely accused by you. Please don't misunderstand. The children of the House of the Hearth are often misunderstood, perhaps due to the reputation of the Fatui. There's no getting around that. All I meant to say is that Fontaine has been stable in recent years. The people are well off and the children lead happy, fulfilled lives. That is something truly worth cherishing, and no one wishes to disrupt such peace. Now then, you have come regarding the matter of child, correct? Well, yes. It appears the ever-busy Rdx Nouvillette doesn't wish to waste time with diplomatic pleasantries, and hopes that we can get straight to the point of our talk. Yes, as you surmised, understanding child's situation is indeed one of the goals of this trip. As we are both diplomats from Snezhnaya as well as Fatui harbingers, Child and I have always been colleagues. Were anything to happen in Fontaine, each of us would serve as the other's attorney to resolve the issue. So now, in my capacity as his attorney, I request that Child be turned over to Snezhnaya. We have a responsibility to cooperate with Fontaine and resolve what has happened to him together. The rules governing attorneys only apply before a trial has concluded. Since a verdict has already been rendered, we see the case as settled. I apologize for being unable to grant your request. An outright refusal. Very well. I respect all the rules of Fontaine's courts, just as I respect you as Chief Justice. Okay, why don't we back up a step? You don't need to transfer Child to us. I only request to enter the fortress of Meripede to see Child and confirm his condition. It's not like you couldn't even manage to fulfill a simple request like that. Right, Miss Farina? About that. The fortress of Meripede has always been completely autonomous. Even we have no authority to interfere there, and diplomatic issues do not suffice as an excuse. However, if you absolutely must confirm the situation of the Harbinger, I have a proposal. The knave showed up already? थोड़ी सी गर्मा गर्मी हुई है Well, न्यूलेट और Lenny नेव के did say बीच में. that father will be returning soon. We didn't even know that Lenny was from the House of the Hearth at the time, so we kind of had that information. Yes, thank you for your kind advice. I'm well aware of the situation. I also noticed that Lady Farina acts a little odd and unnatural whenever I bring up matters related to the knave. Could the knave be threatening Lady Farina or something? If that were the case, then why wouldn't Lady Farina inform me? And what means could the knave possibly have to twist the arm of an Archon? So maybe that's not very likely. Even though Farina can a little weird at times, she's still an Archon. In reality, this problem is even more thorny than it appears. According to reports from the fortress of Meripede, Child recently disappeared under mysterious circumstances. The details are still unclear. We cannot rule out an escape, but there have also been no reports of him outside of the fortress of Meripede. Special guards oversee the fortress, and its internal systems are extensive. Combined with the special characteristics of the surrounding terrain, an escape should not be possible. I suspect that there's something else behind Child's disappearance. I was only willing to share this information with you because you are friends of Child, and it is my duty to see justice done. So this is what you wanted to see us about before. Yes. I would like you to go to the fortress of Meripede and investigate Child's disappearance. This was my proposal during our meeting with the knave. Rather than allowing her to intervene, I offered to send someone to find out about Child's situation and report back to her in detail. The knave did not seem satisfied by my proposal, but she still agreed to go along with it for the time being. Her words were, "We will talk more once we have that report." So that means we bought ourselves some time.
Firstly, you're already acquainted with Child. Your eyes may discern relevant details there that others would miss. And secondly, is the consideration of the unique nature of the Fortress of Meripede. Isn't it just Fontaine's prison? I would not define it so crudely. The Fortress of Meripede is not affiliated with the court system of Fontaine on paper. It has always existed as an autonomous entity. Early in Fontaine's history, criminals were punished with exile, not imprisonment. Even today, sentences against convicted criminals still include exile, just as before. The Fortress of Meripede may seem like a prison, but it should in fact be regarded as a gathering place for exiles. All we do is dispatch guards to keep watch and help maintain security, but we have no right to get involved with any other matters. Although I do have a personal relationship with the administrator there, neither myself nor the courts have the right to be directly involved with the investigation, no matter how serious the grounds. Gets it now. That's why you need us to conduct our own investigation as a third party, right? Correct. I will arrange false charges against you so that you may secretly investigate inside the fortress during your detention. This will save us a lot of unnecessary trouble. So, हम लोग जेल जाने are you वाले two हैं. willing to accept my proposal? Yeah. If I look at it, it seems we're the best choice. We accept this difficult task. Reluctantly. You two have my sincere thanks. This matter is of critical importance to Fontaine's current situation. Also, I hope that both of you can keep this operation a secret. We will rendezvous at the Fortress of Meripede's entrance on Irenaeus once you've prepared yourselves. I will arrange for someone to take you inside. Prepared ourselves? Is there something we need to prepare? Perhaps you could enjoy a good meal and have a nice bath. I'm afraid that living conditions inside the fortress are nothing like those on the outside world. Even though we'll be there on trumped up charges, we'll be in prison for real. Please do not worry. Since you are sacrificing both your time and quality of life for the sake of delivering this report, you will be compensated according to the highest standards permitted to legal staff, regardless of the outcome. Now that's more like it. Are you leaving now? In that case, please take this cake as a token of my personal gratitude. ओके, न्यूलट हम लोग को केक दे दिया और अब हम लोग को जेल भेजा जाएगा बेफालतू में, बिना किसी गुनाह और अपराध के. एक सेकंड गाइस, एक सेकंड में जरा सा बस. बस 1 मिनट के लिए मैं जरा सा कुछ चेक कर रहा हूँ, उसके बाद दोबारा से मैं ऑन कर दूंगा. ओके गाइस, नाउ वी आर रेडी. Are for now, but तो अब friends चलते हैं. are काम को जाने के forever. लिए बोल रहा है 132 मीटर नीचे. ओके,
the cake was pretty good. But as soon as Mama remembered that we're about to go to prison, Paimon's stomach suddenly became completely empty. इसको बस हमेशा खाने की पड़ी होती है। Now that Paimon thinks about it, we've always been super careful ever since we arrived in Fontaine, just to avoid breaking any strange laws here. But here we are, about to willingly send ourselves up to the fortress of Mirrorpeed. Maybe this is what they call fate. Let's just try our best to investigate everything quickly once we get there. Paimon doesn't want to stay in prison too long. अरे अरे कौन फोटो खींच रहा है अभी हम लोग Oh, का? what is that Oh, I hear? Charlotte. Is it the taste of a breaking story? Hey, you can't hear a taste. And what are you doing here, Charlotte? Oh, don't remind me. I invited an eyewitness to a case to eat here, and I was planning to get some great material out of him, but he didn't even show up. Calm down, calm down. This is nothing new. As a journalist, you should be used to this by now. And as long as you can score some juicy tidbits from the traveler, you might still be able to recover the cost of the meal. You know we can still hear you, Charlotte. Never mind. It's nothing. I just heard you mention the fortress of Mirrorpeed. You didn't commit a crime, did you? Please tell me all about it. Hey, we would never. We're just going there to... Oh no, Paimon almost forgot that Neverlet told us to keep it a secret. Huh? You're being arrested for that? Oh. Well, but now that I think about it, I suppose that's not completely unreasonable. That's pretty despicable, almost as offensive as committing theft. You mean Paimon really did something that serious? Sorry, Paimon really messed up. Well, in that case, it's nothing particularly newsworthy after all. Oh, how disappointing. Oh, right. There's still a chance. Since you're going to be at the Fortress of Mirrorpeed, would you be willing to help me gather some material for a story? Dad, Paimon doesn't think we'll have any time. Nothing difficult. All you have to do is think of a way to get some time face-to-face with the warden of the fortress. He was awarded the honorary title of Duke in Fontaine. Sounds really cool, huh? Only those who have made significant contributions to the nation have been conferred this title. It's incredibly rare. On top of that, the Fortress of Mirrorpeed has never been under the jurisdiction of the courts. Practically nobody, including journalists like me, knows anything about the person in charge there. Oh, if I could write an exclusive article about him, I bet it would sell a boatload of papers. You make it sound easy, but it really depends. Of course, I wouldn't ask you to do it for free. So this meal is on me. You got a deal. We'll do anything you want. पैमन खाने के लिए कुछ Then भी it's करेगी। settled. The food should be here any second, right? Huh? Wait, just how much did you order? What the? अरे भाई सही में भी बहुत ज्यादा ऑर्डर कर दी बे। तुम भुक्कड़ है बे। Well, guess we have nothing to regret. कहाँ जाना है? फोर्ट्रेस ऑफ मिरोपाइड। क्या वहाँ का सबसे पास का? ओके कोई बात नहीं। Wait. Paimon just did something really ominous, didn't she? The show begins. अरे ये हम लोग को मिल गया चिकन का टुकड़ा। अच्छा इधर से नहीं जाना है। उसके साइड से रास्ता। अब हम लोग जा रहे हैं जेल में बंद होने के लिए। जाना कहाँ है? अच्छा वहाँ जाना। ओके
You have come just as promised. Yes, this is the one and only entrance to the fortress of Meripede from Irenaeus. Careful. You may want to step back a bit. Whoa! So you have to go down from here? Is the prison underwater? Yes. Utilizing both the barrier of the water as well as the fear humans have of the depths, the fortress of Meripede is naturally the perfect place to confine and guard criminals. But do not worry. It is not nearly as frightening inside as you may think. You will see for yourselves once you are down there. You're right. Don't know about you, but just thinking about being at the bottom of the sea like that gives Paimon the heebie-jeebies. Oh, and What there's is one this more thing. heebie-jeebies? I mentioned that I have had personal dealings with the administrator of the fortress, Ridesley. Oh, He's a अब very राइजली से मिलने वाले हैं हम लोग. shrewd fellow. Yeah, we heard about him too. He's the Duke, right? Correct. He is the highest-ranking manager of the underwater prison. Even though you are going there to investigate at my behest, it would behoove you to avoid any confrontation with him or any of his subordinates. The Duke rarely ever leaves the fortress of Meripede, but that does not mean he is not privy to all that is happening inside and outside the fortress. He is quiet, but not unaware, so please bear that in mind. All right, Okay, I will take that it's in about mind. all the time that we have to talk privately. I'm counting on you two. Don't worry, we won't let you down. Good. Madeline! I'm here, Monsieur Nervalet. These two are the newest convicts, I presume? Don't worry, they won't escape on my watch. Like we would try. Please follow me, you two. I'll process your paperwork for entering the fortress of Meripede. क्या मतलब? What the fuck? Involved in other quest, please check the details. अब ये कौन से क्वेस्ट में फंसा हुआ है भाई? Unfinished comedy. How to go down there? अच्छा ये लिफ्ट है क्या? खुल जा यार. What the fuck? क्या हमको उसके अंदर डायरेक्ट टेलीपोर्ट करना पड़ जाएगा? Literally a pain in ass. Unfinished comedy इसके अंदर लॉक्ड है. और नीचे जाना. भाई आप पहले व्हाट द नहीं भाई नहीं ब्रो. ऊपर नहीं जाओ यार, ऊपर नहीं जाओ. नीचे चल भाई. हाँ बहुत सही, बहुत अच्छी बात. वेरी गुड. आई थिंक तब लगता है दूसरे वाले लिफ्ट से जाना होगा. दूसरा लिफ्ट कहाँ है भाई? हाँ ये रहा. आए
वेट मिनट गैस, मुझे जरा सा ऑफ करना पड़ेगा अपना माइक। Oh. Oh. हेलो अमन ब्रो, हेलो हेलो हेलो। 2 मिनट भाई, बस 2 मिनट लगेगा मुझे, कुछ काम आ गया जरा सा, बस 2 मिनट। माइक ऑफ कर रहा हूँ मैं। Have you ever kept goldfish as pets? They're very cute. Oh. Oh.
Ooh, let me open it. If we ओके गाइस, तो दोबारा से बैक आ चुके हैं। हम्म तो 300 कूपन पॉइंट हम लोग को जमा करना है। कूपन पॉइंट शायद ऐसे ही जमा हो रहा था। चेस्ट खोले तो जमा हुआ। भाई इसके ऊपर चढ़ जा यूं मियां। और कहाँ से हो सकता है? कहाँ से कहाँ से? इन लोग को एकदम ध्यान से देखना पड़ेगा कि कहाँ से। यहाँ से हो रहा है क्या? नहीं, उसी टाइप से में भी और कुछ मार्क आएगा। हाँ, यहाँ भी आ रहा है, बट इससे तो कुछ नहीं हुआ। हम्म, ओह, बकचोदी शुरू कर दी मैंने इसके साथ। हम्म, हम्म, यार नीचे जाने पर और मिलेगा क्रेडिट कूपन्स। एक बार यहाँ का पूरा चक्कर मार लेते हैं, फिर देखते हैं। ओके, यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ तो मैंने पहले घूम कर गया मैं। हम्म, और कुछ वैसा तो दिख ही नहीं रहा भाई। मतलब बड़ा अननोइंग पार्ट है यार ये। चलिए यहाँ पर आई थिंक हम लोगों ने एक चक्कर लगा लिया है, बट यहाँ पर दिखा नहीं। और नीचे जाने का है क्या? और नीचे जा सकते हैं हम लोग। और नीचे चलकर देखते हैं, क्या पता नीचे मिल जाए कुछ।
Hmm. Go to the production zone. आए, यहाँ कुछ होगा क्या? आई डोंट थिंक कि यहाँ पर हमको कुछ मिलने वाला भी है। ये हम इसके जोन से बाहर आ गए, हमको ऊपर ही जाना है। उसके ऊपर वाले फ्लोर पे तो चेक कर चुके थे, तो उस पे तो नहीं है। हम लोग को लिफ्ट बदल के फिर उसके शायद से 3 फ्लोर है यहाँ पर, तो हम लोग को फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। भाई लिफ्ट कहाँ है यार? कोई और तरीका होगा ऊपर जाने का, मे बी कोई और लिफ्ट। नहीं, हाँ ये रहा ना। I do love Spina di Rosula's logo. It was designed by my mother. Have you noticed how it's shaped like a heart? यहाँ पर आई थिंक वो है क्या? नहीं, वो नहीं है। आह, व्हाट द फक। हाँ, इसी के ऊपर रहते हैं, ऐसे ही पहुंच जाएंगे।
अपने को सिर्फ पहुंचने से मतलब है, लिफ्ट से पहुंचे या जहाँ से पहुंचे। हम्म। तो सेट से जाते हैं। हम्म। I really want to go traveling. I don't mind where we go, as long as I have my friends with me. Learn the safety rules by heart. कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार, क्या करें यहाँ पर। ये क्या इनेबल और डिसेबल हो रहा है। भाई बस एक मिला यार, उसके बाद कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है क्या करना है यार यहाँ पर। क्या है यार, ये फालतू का वर्ल्ड क्वेस्ट में फंस गए यार। क्यों ही स्टार्ट किए थे हम इस वर्ल्ड क्वेस्ट को, समझ में नहीं आ रहा। आई रिग्रेट। फालतू चक्कर में फंस गए यार। हम्म। Learn the safety rules by heart. What's this? भाई क्या करें यार। वेट अ मिनट।
अरे यार क्या करूं यार, मैं समझ में नहीं आ रहा मुझे। यहाँ पर को टेलीपोर्ट करके देखते हैं। कहते हैं कि मुझे एक नया क्वेस्ट दे देगा। ओ भाई, फाइनली ये आगे बढ़ा यार, क्वेस्ट आगे बढ़ा ये। अब से भाई किसी क्वेस्ट को अधूरा छोड़ने की गलती नहीं करेंगे बे यार। और अगर नहीं करना होगा तो उसको स्टार्ट ही नहीं करेंगे। भाई बड़ी तकलीफ दे रहा है ये तो। Hope everything goes smoothly. Can't be fun. हटाओ यार, कि नहीं देख रहा मैं इसको। हटे यार, जल्दी जल्दी स्किप हो गया। वर्ल्ड कप पे कौन ध्यान देता है। हाँ, यहाँ पर और कोई मैकेनिज्म है? ये बोल रहा है कि वो चार्ज नहीं है। वेरी सिंपल। हाँ बहन, इट्स वेरी सिंपल भाई, ऑप्शन ही नहीं आ रहा।
वो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, पर कुछ नहीं है। अच्छा, मैं भी शायद अगर इसको जाकर आऊँ कोई यहाँ पे। ओके, क्वेस्ट कंप्लीटेड। क्या अब हम आर्कोन क्वेस्ट कर सकते? नहीं कर सकते भाई, एकदम नहीं कर सकते। विश्वजीत सेन, यू फ्रॉम? बट आई एम फ्रॉम बिहार ब्रो। बिहार, पटना बिहार, इंडिया, अर्थ, एशिया। आई एम बंगाली। ओके ब्रो। क्या? पता नहीं, बंगाली में मुझे कुछ बोलना वलना आता नहीं भाई, मेरे से एक्सपेक्ट मत करियो कि मैं बंगाली में कुछ बोलूँगा। बस मैंने एक वो सुना था, क्या कहते हैं उसको, हाँ वो भूल भुलैया वाली मूवी में, क्या है वो, आमी तुमको भालोवासी, बस इतना ही जानता हूँ मैं, बाकी और मुझे कुछ नहीं पता। अगर वो चैनल पे आ गया तो सब्सक्राइब कर देना भाई, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना। यस लव यू। अच्छा, लव यू होता है क्या उसका मीनिंग? ओह, हम्म, नाइस। मुझे तो बस इतनी आती थी भाई। और तुम्हें कुछ आती है नॉर्मल वर्ड्स के बारे में तो बता दो। व्हाट द फक! आप 500 क्रेडिट कूपन भाई, मेरे से 300 नहीं हो रहा था। हाँ, कोई मुझे कमीशन दे सकता है जिसकी वजह से कि मुझे क्रेडिट कूपन्स बढ़ जाएं? कोई भाई, कोई तो होगा यार। जैसे कि तुम कहाँ जा रही हो? आ, ब्रो, वो तुमने क्या लिखा है वो, आई कांट रीड दैट। Don't be clever.
मैं वो कैसे कर सकता हूँ यार? मैं हिंदी जानता हूँ बस भाई। तुमने क्या लिखा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। गोया मारा आई। ओके, यहाँ से नीचे जाना है लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, कूपन पॉइंट्स के लिए क्या छोटे मोटे जो भी टास्क वगैरह मिल रहे हैं उनको करना है लगता है, मे बी उसके बाद जाकर वो होगा। हाँ हाँ, आई थिंक ऐसा ही है कुछ। वो टास्क मैं करूँगा उसके बाद ही फिर ये होगा। ओके, यहीं से तो दिख रहा है मे बी। राइट भाई, ये अरे माइट यहाँ क्या कर रहा है? कोई हमारा ओके 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 ओके। ब्रो फ्री फायर खेलो भाई। फ्री फायर में प्रॉब्लम पता है क्या होती है स्ट्रीम करते टाइम? मतलब वो किसी चीज़ का ग्लिच है या क्या है मुझे पता नहीं, बट मैं जब जब भी फ्री फायर स्ट्रीम करता हूँ तो मेरा पिंग मतलब अलग ही लेवल पे हाई चला जाता है। जैसे देखो ये गेम्स पे पिंग तुमको आराम से मेरे 100 150 आ रहे हैं, उस पे पिंग मेरी 20 की You are दिखती है। not welcome लेकिन here. व्हाट द फक, लेट मी किल हिम। ओके, हाँ तो उसमें होता क्या है कि पिंग अजीब, तुम्हें बस 20 की पिंग दिखती रहेगी, बट वो चलेगी बिल्कुल 400 500 पिंग की टाइप से। और ये कोई ग्लिच है या क्या है मुझे नहीं पता। मे बी कल अपडेट आया होगा तो हो सकता है कि अपडेट आया होगा तो मे बी उस चीज़ को ठीक कर दिया जाए। क्या लिखा ब्रो तुमने? हाँ, गाली मत दो, फैमिली स्ट्रीम करो। इसलिए देखो आज अज्जू भाई कहाँ से कहाँ चला गया। अरे यार, अज्जू भाई की तरह तो नहीं बनना। अज्जू भाई की तरह ही तो नहीं बनना है भाई। अरे यार, गलत जगह गया मुझे लगता है। होता है। मे बी अपडेट आया है तो शायद ठीक हो जाए। मैंने अब तक ट्राई नहीं किया, बट वो मैंने 2 3 दिन पहले स्ट्रीम करा था फ्री फायर का, तो बट वो हो नहीं रहा था यार, कोई पिंग की वजह से मैं खेल नहीं पा रहा था। फिर क्या ही स्ट्रीम होगा। निकलूं कैसे यहाँ से? Time to show me what you got. बुलेटिन बोर्ड नहीं है, सुनो। तो यार क्या है भाई ये? अच्छा, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। और देखता हूँ एक बार फ्री फायर की भी स्ट्रीम करके, अगर वो मेरा पिंग का इशू नहीं हुआ तो फिर फ्री फायर की भी स्ट्रीम करा करूँगा। कोई तो कमीशन मिल जा भाई।
राइजली से मिलने चलते हैं। अरे राइजली तो यहाँ पर है ही नहीं। कहाँ जाना है? अच्छा, इसके नीचे वाले फ्लोर पे जाना है। ओके, लिफ्ट कहाँ थी? तो यार टेलीपोर्ट क्या यार, कौन क्वेस्ट करने बैठा था? ये क्या कर रहा हूँ मैं? सारा मूड खराब कर दिया इस वर्ल्ड क्वेस्ट ने भाई। दिसंबर ओके, क्वेस्ट कंप्लीट हो गया। ब्रो ये खत्म होना यार, ये नहीं खत्म हो रहा यार, एकदम मेरा तो जल रहा है मेरा अंदर से अब।
नहीं करना यार ये वर्ल्ड क्वेस्ट। गलती से वर्ल्ड क्वेस्ट क्या स्टार्ट हो गया यार, पीछे पड़ गया ये साला उसके। मीट बैक एट द यूजुअल प्लेस। बड़ी फिर से ब्रेक लेने के लिए कह रहा है भाई, नहीं कर रहा यार मुझे ये क्वेस्ट। कहाँ फंस गए यार, क्यों क्यों ऐसा क्यों? भाई जल्दी से तू इसको फ्री करे यार, फोर्ट्रेस ऑफ मेरे पैट को, मुझे आगे खेलना है। नकुल वशिष्ठ, हेलो 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 ब्रो, हेलो, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो। पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करो, स्ट्रीम को लाइक करो। टिपिकल आर ऑफ एवरी स्ट्रीमर। क्या हो रहा भाई? तुम इस गेम के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो? अगर नहीं जानते हो तुम्हें सच में पता नहीं चलेगा तो क्या हो रहा है यहाँ पर। जानता हूँ, खेलता हूँ। अच्छा खेलते हो? भाई तुम अभी कहाँ पर हो, किस एआर पे हो, और कौन सा क्वेस्ट कर रहे अभी? अरे भाई ये फाउंटेन का स्टोरी क्वेस्ट है, गेम ऑफ द रिच। स्टोरी क्वेस्ट नहीं है वो, वर्ल्ड क्वेस्ट है। बट मैं तो करने आया था आर्कन क्वेस्ट यार। बट वर्ल्ड क्वेस्ट का ऐसे ये वाला एरिया लॉक्ड है, मतलब वर्ल्ड क्वेस्ट में इन्वॉल्व ये वाला एरिया, तो इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। ताकि जब तक ये फ्री वर्ल्ड क्वेस्ट फ्री नहीं होता तक तो आर्कन क्वेस्ट कर नहीं सकते। सामने वाले का नेम भी नकुल। हाँ, क्या कोइंसिडेंस है भाई। फ्रेंडशिप इम्प्रूव्ड, ओके ओके। कोई स्टोरी क्वेस्ट हो रहा। कहाँ है चिराग? साले बगल से मैसेज करना बंद कर साले। फ्रेंडशिप डिटेक्टेड, अरे यार। जा भाग 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 भाग, जा भाग। कोई ना, मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत अनोइंग वाला क्वेस्ट है। तुम कौन सा क्वेस्ट कर रहे हो यार?
आरा नारा, अरे यार was one of the most annoying quest यार। हाँ भाई मैंने किया था, हालत खराब हो गई थी। रुको यार, ये प्रहलाद कुमार को पहले टाइम आउट देना तो मुझे। ओके, ये हो गया। आरा नारा क्वेस्ट, सारे क्वेस्ट का बेताज बादशाह। अरे यार इतना भी उसमें बट मजा नहीं आया था क्वेस्ट करने में, जितना ज्यादा वो अननोइंग था। तंग कर दिया था भाई उस क्वेस्ट में। एक तो साला जहाँ जाओ वहां पर वो सितार बजाने को मिलता है, बस बजाते रहो, यूं नहीं हो। ओके, लगता है नीचे जाना पड़ेगा उसके लिए मुझे। हम्म, दिमाग खराब, हाँ ब्रो दिमाग खराब हो जाता है यार उस पे। बट अब करना ही पड़ेगा ना। मैंने बस ये वाला ही क्वेस्ट छोड़ दिया था, बाकी सारे हो गए। तो उसके लिए तुमको आर्कन क्वेस्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? अगर नहीं आ रही तो भाई छोड़ दो उस क्वेस्ट को यार। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि उस आर्कन क्वेस्ट करने के लिए वो आरनाड़ा क्वेस्ट जरूरी है। जहाँ तक कि मुझे याद है, मुझे समर क्वेस्ट करे हुए लगता है वही 1 महीना हो गया लगभग। तो और नीचे जाना पड़ेगा। व्हाट? वापस से यहीं आ गया यार मैं तो। हाँ, अब जाना है नीचे। हम बड़ों के पास जाना है। एक मिनट, एक मिनट ब्रो। ओके, मैंने उसको टाइम आउट दे दिया। अब वो थोड़ी देर शांत रहेगा। मेरे फाउंटेन वगैरह सब कुछ कर लिया, बस रनर छोड़ दिया था इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सिजिल 400 हो गई है। अच्छा, तुमने फाउंटेन क्वेस्ट भी कर रखा है? ओह, इसलिए तुमने बस रनर क्वेस्ट छोड़ रखा है। तो जाना। ये पे गाड़ी आवे लगेगा अभी, हम बेंच दिमाग नहीं खराब करो मेरा। मैं तो अप टू डेट हूँ। अच्छा, फोन पे खेलते हो पीसी पे खेलते हो गेंशिन? क्या? नहीं, हमको कोई मेल नहीं आया। हमको कोई मेल नहीं आया। आज देखा? आज कितना, 24 तारीख है ना? तो हाँ शायद 24 को भी एक था ना। बीटेक वाला गया ये सब। बीटेक वाला लग गया। इन लोग का 24 तारीख को लगा, हम लोग को हमने बोला था 30 जनवरी को भरने वाला। डॉक्टर दोनों पे? अच्छा, दोनों पे खेलते हो? और मैंने रख रखा है मोबाइल पे भी, लेकिन बस मोबाइल में ग्राफिक्स उतने अच्छे नहीं दिखते ना, तो मैं खेलता ही नहीं उस पर। लैपटॉप ही खेलता हूँ बस। ग्राफिक्स मैक्स कर दो भाई। फोन उस हद का होना चाहिए कि उस पर ग्राफिक्स मैक्स करके खेल सके। लैपटॉप पे तो मैक्स ग्राफिक्स में ही खेलता हूँ, बट फोन में भाई वो अभी उतना नहीं है ना। फोन गेंटिन चलाने के लिए अच्छा खासा फोन चाहिए होता है। एक मिनट भाई, मैं जरा सा अपनी स्क्रीन ब्लैंक कर रहा हूँ। ओके,
ग्राफिक्स सब कुछ मैक्स, लैपटॉप पर मैक्स पे रहती है। फोन पे भाई मैक्स ग्राफिक्स पे खेलना थोड़ा इम्पॉसिबल सा काम हो जाता है भाई। मैंने बिल्कुल एकदम सबसे लोवेस्ट पे रख रखा है, फिर भी वो 40 से 45 एफपीएस देता है बस। और उस पर तुमको पता है भाई 40-45 एफपीएस, अगर तुम गेम अगर वो तगड़े वाले गेमर वेमर हो, या फिर अगर तुमको नॉलेज होगा, तुमको पता है एफपीएस कितना ज़्यादा मैटर करता है। और 40 एफपीएस और 40 to 45 एफपीएस से नीचे कोई गेम एकदम बिल्कुल भी प्लेएबल नहीं होती है। कोई ना, टेंशन ना, लैप में खेलो बहुत बढ़िया। हाँ भाई, लैपटॉप में खेलता हूँ, इसी में बहुत बहुत मज़ा आता है खेलने में। जब मेरे पास लैपटॉप है तो फिर मुझे फ़ोन पर दिमाग लगाने की क्या ही ज़रूरत है, इसी पर खेलता हूँ। एंड आई थिंक अब ये वाला क्वेस्ट ख़त्म हो जाएगा मे बी। तुम्हारा एआर रैंक कितना है ब्रो, नकुल भाई? ये फाउंटेन का क्वेस्ट बहुत बड़े हैं सारे। अच्छा, हाँ, ये क्वेस्ट मैंने लगता है जब मैं लीवे में था उसी टाइम पे मैंने गेम ऑफ द रिस्ट क्वेस्ट ऐसे ही बस निकला था एक्सप्लोरेशन करने के लिए, तो सुमेरु के डेजर्ट से होते हुए मैं फाउंटेन पहुंच गया और बस मैं ये क्वेस्ट कर रहा था। मैंने स्टार्ट किया उस टाइम में कहीं पर अगर फंस गया होऊंगा तो मैंने छोड़ दिया यार, अभी तो कुछ जरूरत है नहीं। ये मैं 2-3 महीने बाद में यहाँ पर दोबारा घुस रहा हूँ। जिस टाइम फाउंटेन आया था उसी टाइम मैंने पूरा एक्सप्लोर करके सारे वेपन्स वगैरह अनलॉक कर रखे थे। तुम्हारा एआर रैंक कितना है ब्रो? ओ भाई, फाइनली खत्म हो गया यार। खत्म हो गया भाई। ओह, एक स्पिन मिला भाई। AR-55 है, अच्छा। ओह, मेरा AR-53 है ब्रो। आज ही बिल्कुल नया नया 53 यार हुआ हूँ अभी खेलते खेलते ही, ये देखो 988 एक्सपीरियंस अभी है इसमें बस। हो जाएगा जल्दी में 55 भी, ज़्यादा नहीं लगेगा। और इस तरीके से खेल रहा हूँ तो मैं क्या करने वाला था यार? ओके, टेलीपोर्ट का पॉइंट यहाँ पर अनलॉक कर लेता हूँ। हम्म कितने क्वेस्ट बचे हैं? क्वेस्ट देखा हूँ मैं, ये देखो, ये देखो, ये हो गया इस वर्ल्ड क्वेस्ट। ये डेली क्वेस्ट तो अभी आर्कन क्वेस्ट करते करते मेरा कंप्लीट हो गया था। और फिर अभी ये देखो स्टोरी क्वेस्ट, ये सारे कैरेक्टर के स्टोरी क्वेस्ट इतने सारे मैंने सबको अनलॉक कर रखा है, बस किया किसी को नहीं है अभी तक मैंने। चलो बोरो, एक स्पिन मार के देखते हैं। आज मैंने 2 स्पिन मार चुका हूँ, ये तीसरा स्पिन है आज का। बेनेट निकल जाए भाई, बेनेट चाहिए था बस मुझे, कुछ ना निकला। कोई फायदा ही नहीं है यार, किस्मत ही टट्टी है। अब चलो आगे का और आर्कन क्वेस्ट। व्हाट द, अबे यार,
आ तो गए वहां से बाहर, अब क्यों ये लोग। मेरी है सबसे करना, मेरी है सबसे टट्टी। क्या बात कर रहे हो यार, तुमने इस बैनर से निकाला कुछ रेड या फिर यूएम या कुछ। हाँ रेडन निकाली है, ओह नाइस। भाई अपनी यूआईडी बताना जरा, एक बार देखो तुम्हारी आईडी कैसी है, कैरेक्टर्स वगैरह। क्या करोगे बस यूं ही। Fire hazard! Coming at ya! Watch out! ओह अभी और। Let my name echo in song! Attack! That's the way! Coming at ya! Feel the foot! Shower me with praise! 6 स्टैक बिल्ड है भाई, देखो मारता हूँ पक्का क्रिट मिस कर देगी, कर दी ना। Boba, get them! You're two! Time to shine! Time for a light show! Oh, that hurt. मेरे यूएमिया बिल्ड नहीं है इसलिए थोड़ी कम डैमेज दे रही होगी। मैंने कोई कैरेक्टर नहीं लगा रखे, लगा दो ब्रो। ये सब लगा के रखनी चाहिए भाई। ओ ये क्या है। Yeah. व्हाट द हेल। Hey there! Watch out! जरा सा हील करना है मुझे। Watch out! At the frying pan! आराम से। मेरे को पहला आदमी बोला था कि जाने का भी With rock. Watch out! हरामी है साला। Hey there! मैंने कैरेक्टर Yeah. कैरेक्टर लगा लो, फिर यूआईडी दे दो, कम से कम यूआईडी दे दो। हम्म, लगाया है बस तुम देख नहीं पाओगे। हाइड भाई, तुम यूआईडी दे दो उसके बाद देखते हैं। क्या कर पाते हैं। वेलकम बैक, फिर से आ गए यार। नहीं भाई नहीं आना यार, मुझे बस फ्री कर दे भाई। और कौन क्वेस्ट करना है, क्या करवा रहा है यार ये मुझसे। भाई दिमाग खराब कर दिया यार इसने।
मैं 11 आवर्स से करने की कोशिश कर रहा हूँ, अड़नारा हुआ ही नहीं। भाई 11 घंटे? क्या 11 घंटे लगते हैं उसे करने में? पता नहीं भाई, मैंने तो बस छोड़ छोड़ के किया था और मैं उसको करता ही नहीं। मैं सब वॉइस लाइन स्किप कर देता हूँ यार। कौन उतना वर्ल्ड क्वेस्ट में मैं उतना ध्यान नहीं देता। बस आर्कन क्वेस्ट के वॉइस लाइन में सुनता हूँ, बाकी सब हटा देता हूँ। जैसे अभी मैं इसकी कर रहा हूँ, मैं ना पढ़ रहा इसमें क्या लिखा आ रहा। बगल में कैटरपिलर है यार, बोल रहा है कैटरपिलर को खोजो। माचोदा बग भोसड़ी, बग भोसड़ी, बग मादर, बग रंडी। कल चूतिया मादर चौध से जाते हैं कभी कभी। बाप को बोल रहा है मादर चौध। ओह सॉरी, लगता है मेरा माइक ऑन था। कौन से नशे हो रहे हैं लोल? अरे ये साले चूतिया रूममेट है भाई मेरा, एक नंबर का मादर चौथ प्राणी है। जब देख रहा होता है ना मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, तो उस टाइम और दिमाग खराब करने आ जाता है, गाली सुन के जाता है। गाली सुने बगैर बैठा नहीं जाता उससे। सुना ही होगा तुमने कैसे पागल की तरह आवाज निकाला था चूतिया। नेट चलाएगा? तुम डाउनलोड नहीं ना करना है कुछ तुमको? डाउनलोड नहीं ना करना है कुछ? तो क्या करना है? बस रील देखना है? डाउनलोड करना क्या होगा? स्ट्रीम चल रहा है भाई, डाउनलोड करोगे स्ट्रीम चुप जाएगा। अरे नहीं, मैं बात करूंगा बोल पे। अरे तो उसके लिए कौन, तो हम यहाँ स्ट्रीम भी उधर कर रहे हैं, इधर प्ले कर रहे हैं, तब पे हो रहा है तो बात करने के लिए नहीं होगा क्या? अगला तुमको डाउनलोड करना है। कौन सा कॉलेज? क्या यार तुम नहीं जानोगे कौन सा कॉलेज है? गुड़गांव में गुड़गांव वर्ल्ड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ओके, लगता है अब ये लास्ट स्टेप है फोर्ट्रेस ऑफ मीरोपाइड से निकलने का। गुड़गांव में बताना कौन सा? गुड़गांव में बताया तो भाई, WCTM वर्ल्ड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। बीटेक कौन सा यार? भाई बीटेक नहीं कर रहा मैं, BCA कर रहा हूँ। बीटेक वाला नहीं हूँ मैं। चाले अपनी लाइव स्ट्रीम में ध्यान देने पर ध्यान दे। विदाउट बीइंग नोटिस्ड से छुप कर जाना है? What the fuck? क्या ये इसने पकड़ लिया मुझे? अच्छा, कोई कट सी ना वहां पर भी है। फेल दे रहा मैं इसको साले को। ओ, तो हम उसको मार नहीं सकते हैं? ओके, बट हम गार्ड की नज़र से दौड़ के निकल तो सकते हैं।
निकल जाए वहां से क्रॉस करके बस डायरेक्ट कूद जाऊंगा नीचे। ओके वहां से तो बचकर निकल गए। अब यहाँ पर भी एक गार्ड खड़ा है। जल्दी 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 जल्दी। व्हाट द फक, जहां जाओ भाई वहीं पर एक गार्ड खड़ा है। अरे यार वहां पे कैमरा क्यों लॉक हो गया यार, क्या बकैती है। फिर से जाना पड़ेगा मुझे। No, not me too. Now I got stomach cramps. ओके गाइस हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। हाँ फाइनली। हाँ सुनाई दे रही मेरी आवाज? हम गौर ही नहीं कर रहे। आई डोंट नो। Is there time for a quick snack? I'll whip one up in no time. हाँ बहुत हद तक सप्रेस हो जा रहा है, लेकिन जब 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 तुम हल्का सा तुम्हारा टोन बढ़ता है हल्का हल्का वॉइस कैप्चर हो जा रहा है। दो दो जगह नॉइस सप्रेशन लगा कर रखे हैं फिर भी तुम्हारा आवाज जा रहा है। इंसानी आवाज है ना, भौंकोगे तो नहीं आवाज जाएगा।
Hmm. Use the loudspeaker to draw away the guards. अच्छा अब यूज कर सकते हैं मे बी। अच्छा दोबारा से उतना नहीं जाना पड़ेगा। ओके ओह फाइनली। गाइस मैं 2 मिनट में आता हूँ जरा सा।